Hello everyone, welcome to Mamta's Magic Talks. Today I am going to share something crucial things of our life. So just watch this video till the end. Someone asked me, "What is your future goal?" I smiled and said, "I never think about the future." And yes, literally, I never think about it because I always believe in the present. If you are living your present life motivationally, passionately, happily, gratefully, stress free, and healthily, then you will find that your future will automatically be bright and healthier too. Many people think that if you have lots of money, all kinds of facilities, and if you are living a luxurious life, that means you have everything and you are living a beautiful and peaceful life. But I don't believe that. Yes, of course, at some point we need some basic things, but it doesn't mean that if you have everything then you can feel satisfied. No, not at all. Even I have seen most of the people who have everything but still they are not satisfied with their life. They always feel like something is missing in their life. And you know what? We are running behind a restful life where we don't have to do anything. But actually, you can feel it when you are completely free, like you have nothing to do. At that moment you can feel एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड. मतलब जब आपके पास कुछ भी ना हो करने को, उस टाइम आप ज़्यादा थका हुआ सा महसूस करने लगते हैं, राइट? सो लाइफ इज़ लाइक दैट. इट इज़ अ काइंड ऑफ मशीन. यस, हम इसकी तुलना एक मशीन से कर सकते हैं. जब एक मशीन यूज़ होना बंद हो जाती है तो उसमें कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, राइट? ठीक ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है. If we stop doing anything, then we start facing lots of issues. So don't stop yourself. I'm not saying that you should work hard your whole life. No, not at all. But at least you should do something for yourself only. Yes, which gives you a healthier life and happiness too. Because भाग दौड़ वाली जिंदगी में हमें सब कुछ तो मिल जाता है, मिल रहा है. अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो है पीस, हैप्पीनेस एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. ये तो हो गई प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग nowadays. Now let's discuss how we can solve it. The first thing that we can do is be happy, not for others only. Just मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुश तो होते हैं बट सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए. अदरवाइज वी फील अनहैप्पी इन आवर लाइफ, इन आवर इनर सोल. यू नो व्हाट, ये दुनिया बड़ी ही अजीब है. आप इसे कितना भी खुश कर लो, खुद को खुश दिखा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. यस, they don't care about you anymore. Then genuinely, if you want to become a happier person in your life, you should work on yourself only. खुद को खुश रखने का कोई एल्गोरिदम नहीं होता. ये आता है आपके खुद के साथ खुद ही किए गए बिहेवियर से. फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त थे. पहले दोस्त के पास सब कुछ था, मतलब सारी फैसिलिटीज थी, बट वो खुश नहीं था. लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को ये बताने या दिखाने की हमेशा कोशिश करता था कि भाई मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ. ऑन द अदर हैंड, दूसरा जो दोस्त था जिसके पास कुछ भी नहीं था, राइट, और वो इनफैक्ट खुश रहता था, बट एट सम पॉइंट उसे ऐसा लगता था कि शायद मेरे पास सब कुछ होता तो मैं खुश होता. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? एक्चुअली वो अपनी इनर सोल को पहचान ही नहीं पा रहा था. वो ये कभी सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं एक्चुअली मैं खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो आई डोंट नीड एनीथिंग
to become a happier person. वो ये सोच ही नहीं पा रहा था. So the thing is, you have to recognize yourself. Don't give too much pressure to yourself, right? So whatever you have, whatever you are, just try to continue it in a good way. The second thing is how to become healthier. See, nowadays, as we all know, nothing is organically grown, right? Whatever we are consuming, somewhere it is full of chemicals. So now the question is what to do? Where can we find organic things? The answer is nowhere. So what can we do? We can do meditation, we can do exercises, we can take an evening walk or a morning walk, we can take morning sunlight, we can sit under the moonlight, right? We can make a positive mindset, we can laugh aloud, we can spread positivity, we can feel happy seeing others, because nowadays it's rare. Nobody can see you as a successful person. So it is very important to build a kind of positive energy within yourself. And after doing these things, you can find a drastic change in yourself. And it is called self help. मतलब खुद की मदद करना. अगर आप खुद की मदद करते हो एक अच्छा इंसान बनाने में, तो पूरा यूनिवर्स आपका साथ देता है, राइट? और यही जीवन का ट्रुथ है. सो इफ यू वांट टू गेट मोर मोटिवेटेड, काइंडली फॉलो द चैनल. वी विल मीट in the next video. Till then, take care.